So at 17, you started selling dish soap, liquid gel form dishwash mein. wells, yeah. Haan. And what is it called? Drop. And then that took off very well as a business. Yep. Right? And by the time you were 18, 19, would you have said you were a successful businessman at 18, 19? Yeah, at 19, I was doing couple of $1 million in revenue. Very solid. And so, फिर, were you ever like hanging out in circles? Because पता है क्या होता है? You get into places. I got into Colombia, pretty fine, very happy, celebratory. Flight में जा रहे हैं, अलग पीछे से disco चल रहा है भाई के, ठीक है? हम लोग finally we are going to the place of redemption. मेरे को वो सीखने को मिलेगा जो मेरे को सीखना है. And then it really depends how well you end up in that social space. Yep. How people in that social space, whatever that might be, accept you, reject you, blah, 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 for you to stay, right? Yep. You go for the cause, you stay for the people. That is generally how, even I'm sure with digital marketing, because if that's, or like even content creation, it's sort of the same thing, right? They come for the value proposition, they stay for the person in some sense. How was the response from all these, matlab big up, bade budde, sub entrepreneurs honge, how were they treating you? They were not taking me seriously at all. No, right? I wouldn't expect. Bro, तेरी लाइफ में क्या है? तेरे को सब यही बोल के चले जाते हैं यार, ऐसे कैसे चलेगा यार? फिर how was that like going to like seminars and all that jazz? How was that like? Yeah, I tell you, my seminars, okay, the first public speaking also, it started like a fluke कि ठीक है, मैंने college में दिया एक speech, first time impress हो गए, and I wanted to, and I approached a lot of people to get opportunities to speak. Because I loved that. There was the first time ever in my life where I was getting appreciated. Business भी कर लिया था, newspaper articles आ गए, पैसा आ रहा है, सब आ रहा है, but the sense of satisfaction came when people gave me standing ovation in college for a presentation. Right? तो मैंने हर जगह गया, I approached them, and then till 19. You approached them. You approached the college. कि मेरे को बुलाओ. हाँ, मेरे को बुलाओ. मैं आऊँगा, free में speech दूँगा. Free में speech. मैं बस दूँगा आके. First 100 speeches I did this. हाँ. First 100 speeches because I was loving it. I went to Toastmasters में सीखा. दूसरे से entrepreneurs, there were big entrepreneurs at that time. Somebody was Ink Talk speaker or TED Talk speaker, all of that. I would reach out to them and be like, this is the approach I applied. And I would only approach the young ones because बूढ़े तो reply नहीं करते. Young entrepreneurship और उस time पे ये सब एकदम से pop हुआ था culture, right? कि at that time I think Sachin Bansal, Varun Agrawal, ये लोग बहुत popular हो गए थे. Flipkart 14-15 हाँ. तो 2014-15 ना, तो उस टाइम पे मैं इनको सबको रीच आउट कर रहा हूँ कि what I'm going to do is you are going to give a speech here, right? And इन सबको पता था कि यूएस में कैसा होता है, टोनी रॉबिन्स कैसे एंट्री मारता है या रिचर्ड ब्रांसन कैसे एंट्री मारता है. ये सब मैंने यूट्यूब पे सीख लिया. मैंने इनको नहीं, मैं समझ रहा हूँ. That curiosity I'm fond of. हाँ, बोल. हाँ. मैंने उनको रीच आउट किया कि यार एक काम करते हैं, तुम तो वैसे भी स्पीच दे रहे हो, तुमको पैसा मिल रहा है, सब हो रहा है, तुम्हारी 60 मिनट की स्पीच है, तुमको इंट्रोड्यूस 10 मिनट्स मैं स्टेज पे करूंगा टू सेट दैट कॉन्टेक्स्ट एंड पीपल विल लाइक फक यार अब सेलिब्रिटी आ रहा है. Because let's just say Sachin Bansal, हाँ, मतलब there's a sense of aspiration and inspiration, but वो एकदम रॉकस्टार नहीं है. टोनी रॉबिन्स रॉकस्टार है. Right. I'll set the stage up कि everybody please welcome like all of that, like मैं Royal Rumble start कर रहा हूँ. तेरे मन में WWE चल रही है, मैं रॉक को इंट्रोड्यूस करूंगा. हाँ. वही हो रहा है मेरे साथ. मैं उनको रीच आउट कर रहा हूँ. 1 2 3 4 को अप्रोच किया. 5th 6th ने they started saying yes. I started going there. उस टाइम पे बस, मैं इंदौर में रहता था तो वहां से बस ट्रैवलिंग. यूजुअली मोस्ट ऑफ द इवेंट्स यूज्ड टू हैपन इन मुंबई एंड पुणे, which is bus distance away. Bus distance, overnight journey. रात को सोते हुए जाओ, सुबह पहुंचे वहां पे. They used to be in fancy hotels. हायत वायत गए, सुबह उसके वॉशरूम में मैं जाता था बस से ही. पूरा वहीं पे वॉशरूम के अंदर जा रहा हूँ भिखारी बन के, बाहर आ रहा हूँ मैं रॉकस्टार बन के. एंड देन आई स्पीक देयर. 10 मिनट्स का स्लॉट किया. लोगों को क्यूरियोसिटी हो गई, कौन है राज, बात करो. ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया. हर जगह स्टार्टेड स्पीकिंग एंड गिविंग. तो आई वाज जस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम people considered I'm an anchor and a host. मनीष पॉल वाली हालत हो गई थी. ये तो सिर्फ आगे बोल के चले जाएगा, कौन है ये. हाँ, right. And I started doing smart things कि वो 10 minutes में मैं 5 मिनट उनको बोलता था, 5 मिनट मेरी कहानी सुना देता था. And then that earned you repute. Then that earned me reputation. And my big moment came
When in 2014 end, How old were I you got this into time? Because we United need the Nations. timestamp. Huh? 17 years old. 17. You're still 17 in 2014. ठीक है. 16 to 17 में एक साल में तो my business was we were doing at the age of 17 I was doing $1 million in revenue, not in profits. You were doing that in 1 year of starting your business. Just 1 year, 6 months. And just to get this straight, this was only because there were no alternatives available. Were you pricing? No, this was because of PR stunt which I made. I went to aunties, like a lot of my friends. I gave my first 100 bottles to my friends for free. I took 10,000 rupees from my dad. Uske andar, I was able to make 200 to 250 bottles of 500 ml bottles. First 100 gave it to friends, took feedback. On aunties ko, just because I had their numbers and direct selling tha, no cost of acquisition, nothing, right? Calling them, telling them that now that you know the product works, I'm going to give you a huge discount. Please buy it in bulk because I'm starting and this is going to give me value. Instead of 500 ml, मैंने 5 liter बेचा. Right? This is for 500 ml का investment करके you sold 5 liter. 5 liter. हाँ. फिर यही aunties को मैंने बोला कि you are loving the product. All you need to do is start talking in your kitty parties and your buildings. इन्हीं आंटीज को तूने एज अ रिक्वेस्ट बोला हाँ. कि अगर अब ये बिल्डिंग में होने लग गया, आपकी बिल्डिंग में कभी गणेश चतुर्थी होता है, नीचे वॉक करने जाते हो, किटी पार्टीज होती है, प्लीज टेल योर फ्रेंड्स कि मैं ग्रो करूंगा और प्रोडक्ट अच्छा है ना. एंड देन इफ यू डू दैट, एवरी 5 आंटीज यू टेल देम मैं आपके घर का लाइफ टाइम फ्री कर दूंगा. अच्छा पिरामिड स्कीम चालू कर दी तूने. हाँ, तो मैंने स्कीम चालू कर दी. इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम 25% डिस्काउंट, आई टोल्ड देम दिस. Right. Because a big bottle was giving me huge margins. FMCG में सबसे बड़ा cost होता है transportation and packaging. Cost of material is nothing. No FMCG company has cost of material. मतलब वो तुम्हारे तक पहुंचाएगी कैसे, शेल्फ पे पड़ा रहेगा, वो इतना लोग लगेंगे, उसकी प्राइस ज्यादा है. नहीं तो सोचना ₹1 की पल्स कैंडी का क्या कॉस्ट होगा यार. You know, that way. So yeah, now, so these aunties, I told them ऐसे ऐसे करो. Then couple of aunties started asking me कि यार ये हमको अगर फुल टाइम करना हो हम करें, आप हमको डीलरशिप दे दो. And I'm like, what dealership is? ये क्या होता है? हम आपके लिए बेचेंगे, आप सब हमारे घर पे उतार दो, हम बिल्डिंग से बेच देंगे. My bulb started going in कि ये क्या होता है. इस मॉडल को बोलते हैं MLM. MLM is multi-level marketing. Which Amway is doing pretty phenomenally. Tupperware is doing phenomenally over the years. मैंने इस मॉडल को पढ़ा, मैं आंटीज के पास गया. आई गॉट 70 डिफरेंट आंटीज फ्रॉम 70 डिफरेंट सोसाइटीज. उन सबको ये स्कीम दी. दिस इज मंथ 2. ओके, जस्ट मंथ 2. इमेजिन मेरे पास, मैं रूम में बना रहा हूँ, मंथ लगे हुए हैं प्रोफेसर एक्स बनाने में. मैं सब एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ. मुझे ये भी नहीं पता कि उनका हाथ जलाएगा कि क्या जलाए, मेरे को कुछ नहीं पता. आई जस्ट नो मैं खुद निकाल रहा हूँ, मैं खुद धो रहा हूँ, वो अप्रूव हो रहा है, सैंपल अप्रूव करके सेल करते हैं. नो, नथिंग एल्स. Right. This is a very bad thing which I made, like which I started. Right. I'm sure. For all the listeners या viewers, मत करना ये. Get it tested, please. Right. 2,000 रुपए ज्यादा लगेंगे, but get it tested. I didn't know all of this. Like I come from I was still 16, dude. What do you expect? Right, of course, bro. मतलब चल ठीक है. Even at 16, if you were doing as much as you were doing, where you were using your own hands. वरना तो कुछ भी 16 साल का बच्चा यार सिम कार्ड बेच रहे होते थे. हम जब छोटे थे 15-16 साल के, अच्छे नंबर वाले सिम कार्ड बेच रहे होते थे, उसमें भी कुछ नकली होते थे, समझ रहा है? तो एटलीस्ट यू वर ट्राइंग इनफ टू बी लाइक ये असली तो है प्रोडक्ट की, सफाई तो हो रही है. हाँ, फिर तो उन आंटीज क्या है, तो आई स्टार्टेड डूइंग दिस, गॉट 70 आंटी, एंड आई टोल्ड देम आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड यू आर गोना बी कॉल्ड आंटीप्रेन्योर्स. वी मेड दिस एंटायर प्रोग्राम आंटीप्रेन्योर नेटवर्क. अब किसी आंटी का हस्बैंड वाज अ न्यूज़पेपर में कॉलमिस्ट. He loved this model. Month 3, उसने न्यूज़पेपर में छाप दिया. Month 4, I had to rent out 1,000 square feet space from my dad in front of his office. We together took that. वहाँ पे बना रहा हूँ 1,000 square feet. Month 5, blasted. Month 6, we have a order to fulfill from one of the biggest distributors of the city because he loved the story. He was moved by the story and he's like, कुछ लोग नहीं होते. I got very lucky here, okay, that he picked up my product after using my product. He was like, you're the first person who's selling this kind of quality at this price. बोलता भाई मैं तेरी जगह होता मैं इसको 100 रुपए से कम नहीं बेचता. And I was selling at 45. My MRP was 45. I was giving it 35 rupees to the retailer. वो बोलता मैं नहीं बेचता यार, तू क्या कर रहा है? And he's a 65-year-old wise man.
ओके इज लाइक कितना बना सकता है I'm like जितना बोलो मेरे पास सब है मैं सब कर सकता हूँ इज लाइक डन नेक्स्ट 3 months का तेरे पास ये ऑर्डर है एंड उसके 3 month के रन रेट के हिसाब से वी वर डूइंग $1 million in revenue per year. यार तू तो बड़ा ही जुगाड़ू है ना wouldn't you say like not जुगाड़ू in the bad sense but like you देख there is a critical thinking mode which is like अच्छा point A से point B का line ये is this line ठीक or not do I need to go somewhere else do I need to you reevaluate an already existing path and then there is creative which is that there is no path तुम figure out करो because these all of what you've told me are unconventional business practices people don't usually approach businesses at least the ones that I know and I know very little but there is so much fluff in comparison to what I'm hearing from you because this seems to be like a very door-to-door very organic like I'll do it with my hand kind of an experience as opposed to and not just that even your speaking career it's like I will insert myself because nobody's going to call me I will do it myself until people recognize I'm worth it right I think for your Instagram stuff create a character and give jugaad advice like this jugadu sing like on reels or some shit because there is so many people my concern is that there is so many people who want to be entrepreneurs who do not know and no matter what somebody's out there to teach them ye jo first 2-3 steps hote na before you start making enough money to run your own shit is the toughest and if somebody has the kind of spirit and the kind of how would I say inclination to be unconventional that you do I mean that might be a good content strategy as well as a valuable that's a very good content strategy I'm thinking about it लिख ले back in my mind मेरे दिमाग में ऐसा आ गया यार ये podcast का एक episode हो सकता है हर week एक particular scene कि every Wednesday I'm coming up giving जुगाड़ Friday like जुगाड़ Wednesdays or जुगाड़ Fridays or something like that or even for reels 15 सेकंड में प्रॉब्लम तुम्हारी A से B है इसको जुगाड़ की तरह ऐसे सॉल्व अब पता नहीं how adaptable that is I'm not the artist right but that would be a very interesting ideas because most definitely I was expecting your story to be more conventional but this seems like one of the most hard-earned entrepreneurial stories a 16-year-old can have